are mainly dealing in polyester spun yarn, which is recycled, mainly produced from PET bottles, which is reused to make the yarns as well as the fiber. And also we are finally making the garment out of that. We have around 70,000 spindles in India as well as 2 lakh spindles in China, in Fuzhou province. So all this we are making over there, recycle specially in India, and other blended yarn, viscose yarn, melange yarn, also some linen yarn we are producing in China. Right now we are trying to promote our new 2 to 3 brands, like we are also making wool fabrics out of recycled spun yarn, as well as some indigo denims, in which we are manufacturing recycled cotton, and then we are making denim fabrics out of it. So for these products we thought this north market is much better, because here mainly for the knitting as well as weaving we can make this fabric. So right now we are just promoting this fabric over here. Just we want them to keep going on for this particular exhibition. Find many customers over here for our products, and they are trying to take the trials and everything, because it's new for them also. We are making from recycled wool yarn, making from recycled this indigo denim yarns, so it's good. ये मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच के हिसाब से भी और मेक इन इंडिया के हिसाब से भी बहुत अच्छी सोच है, और इससे जितने भी नौजवान यहाँ पे देखने आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं काम करने की एक सोच मिल रही है, एक हिम्मत बढ़ रही है। हमारा आने का यहाँ मकसद केवल बायर्स को ढूंढना नहीं है, नए एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना भी है। और इस एग्जीबिशन में जो लोग भी आएंगे अंडरस्टूड है, वो सीरियस बायर होंगे। वो बाइंग आज करें या आज से 1 साल बाद करें, आपस में पहचान बनना, बातचीत होना, प्रोडक्ट से कन्विंस होना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सर एक्चुअली जो हमारे पास ना सीरियस बायर ही आया, मतलब रश नहीं था, तो हम बायर्स को ज़्यादा टाइम दे पाए, उसको अपनी क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में सारा कुछ बताने में हमें काफ़ी ईजी रहा। नहीं तो बाकी एग्जीबिशंस में क्या होता है कि अनवांटेड पीपल्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो जो कंसर्न बायर है वो थोड़ा वो मिस हो जाते हैं हमसे। I feel this is one of the very informative platform where really people like corporates they can be benefited, because when I looking just partially I could see almost all the good companies including Reliance, Indorama, Sanatan, Bilosa, and then so many, even then their user also. So I feel this is very informative. It's a very good platform. Delhi and NCR, so many brands and buyers are here in NCR. We are manufacturer of the Shifley embroidery fabrics and laces. See, it's very good attempt, I will say, because the person who is coming up here is basically related, is focusing on accessories when he is coming here. He has in his mind that I'm looking for thread, I'm looking for fabric, I'm looking for embroidery, I'm looking for crochet.
So he's focused on that. So whatever the person whosoever is coming is genuinely required, he has a requirement for that. Whether he's placing the order or not, but he's focusing on that particular thing. So that's why it's a very good attempt, and actually we are happy with it. I will, in short, this is what we need. They are buying houses, there are garment exporters, and yes, there are some of boutique owners also, and all which we need, like we have to also cultivate that sector. So they are doing it like the next event is going to be something which everybody will see. Yes, it is very much beneficial for our industry, and we are giving training to the new young people in our mill also. We are encouraging this program, and it is very helpful for the youth who are unemployed. They are getting skill, and ultimately it will be helpful for the country also. It is very good. Basically, these are the different section of the supply chain. तो जैसे ऑर्गेनाइज हुआ है और जैसे डिस्प्लेज वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन है, इट हैज़ बीन डन वेरी वेल. और बाहर भी इट वाज वेरी नाइस रजिस्ट्रेशन और रिसेप्शन पे इट्स बीन ऑर्गेनाइज वेरी वेल. एंड आई फील कि ऐसे फेयर्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो हमारी ट्रेड है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये. क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो अदरवाइज़ जैसे ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो साउथ में हैं, तो वहाँ हम लोग इतना विजिट नहीं कर पाते. अब ये लोग जैसे इतने सारे यहाँ पे आ गए हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन. This is a very good organization. In future also, this is very good. All the combination is for yarn, fabric and accessory is very must. Participation here in YFA helps us a lot in terms of interacting with our existing members, so as to kind of expand our rapport with our customers, as well as letting people know about what fiberfashion.com, and letting them understand how they can take benefits out of बहुत अच्छा है. अब पहले भी जब फेयर होते थे तो जनरली मशीनरी बहुत हो जाती थी, हमें अपने टाइप के कस्टमर सप्लायर्स मिलते नहीं थे यहाँ पे. अब इसमें हुआ कि सारे क्वालिटी सप्लायर्स हैं, इकट्ठे हैं. मीन जो हमें चाहिए वो यहाँ मिल रहा है. अभी पहले जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत होता था, हमारे काम का तो बहुत कम मिलता था, 10% भी नहीं होगा. आज यहाँ पे 90-95% जो है हमारे मतलब का ही मिल रहा है. तो मीन्स इट्स समथिंग वेरी गुड. You see, what we will say is that everybody now is looking for a departmental store. More and more services, if you give under one roof, it will help. It will help in cross-selling. It will bring you different kind of customers, and you will be able to reduce your cost tremendously, because management cost, fixed cost remains the same. So if one has been able to do these things in one roof, it will help them in the long run. In fact, my advice and suggestion would be to add more. बहुत बढ़िया किया उन्होंने ऐसा, मतलब ये पहली बार हुआ है ऐसा, और आगे बढ़ता रहे, बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. ये मतलब जितने भी टेक्सटाइल वर्ल्ड के लोग हैं यहाँ पे, और लोगों को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, नई नई एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. तो अच्छा है. नॉर्मल हम लोगों के लिए, जो हम लोग बाहर नहीं जा पाते, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है.